Sometimes my friends ask, bro, what's the next 5x or 10x altcoin? Man, I don't give a shit about any 5x or 10x. I'm more than happy with my Bitcoin, even if there is no X in it. We will not get that respect and pride we hold along with Bitcoin. To be a part of that list, Bitcoin hodlers. We are not the same, bro. Hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. What a crazy day, man. 15% jump. Last time ऐसा above 14-15% jump मिला था back in 2021, 8th of February. What a way to finish the February. Chart में मैं बाद में आता हूँ, but it was something awesome. Last एक साल में ऐसा move देखने को नहीं मिला है. हाँ, जरूर देखा है नीचे आने के टाइम पे, but the way Bitcoin bounced, it was awesome. You won't believe, मैं पूरा शाम till 2:30 at the night I was continuously in front of the laptop. Anyway, it was not recommended, but I was enjoying that view. It was so damn satisfying. So आने वाले टाइम पे क्या होना है, क्योंकि we are not satisfied, correct? We are the human. हम लोगों को इतना मिल जाए 15%. Now we are thinking about next 30%. Then 30% मिल जाएगा तो we will be thinking about next 100%. So let's begin with the chart. But before that, this is when each and every government should understand the value of Bitcoin. When everything goes shut down, Bitcoin rise. Now look at this crazy chart. Day before yesterday मैंने एक वीडियो पे बोला था कि Bitcoin चार्ट Nasdaq के चार्ट को फॉलो करता है. Nasdaq का चार्ट ये वाला है, Nasdaq का चार्ट इन स्काई कलर पे, एंड ब्लू पे है S&P 500, एंड हियर इज आवर ऑरेंज पिल विच इज Bitcoin. हाँ, जरूर फॉलो करता है. जस्ट लुक एट ऑल द बम्प्स इन एवरी कर्व. dump, but there is nothing in this world. There is no chart, there is no stock, bond, asset in this world which can beat this Bitcoin's move. चाहे Nasdaq हो, S&P 500 हो, चाहे कुछ भी हो. गोल्ड का तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ. बिटकॉइन का एक दिन का जो 15% अप है ना, गोल्ड ये 15% अप होने के लिए 10 साल लेता है, एंड बिटकॉइन जस्ट टेक 6 hours, just 6 damn hours. So nobody can match Bitcoin. It's untouchable. Alright, now this is a Bitcoin USDT Binance chart, and according to this chart, Bitcoin was still up by 16.48%. So 15% worldwide है, but still again exchange to exchange it differs. But according to Binance chart, Bitcoin is up by 16.48%, and after this 15 points jump, Bitcoin is now the 14th most valuable currency in this entire world at this point of time. चाहे वो रशियन सिटीजन हो या फिर यूक्रेनियन सिटीजन हो, they both needs Bitcoin more than anything else, more than any other currency in this world. कल जब रशियन रूबल क्रैश हुआ 30%, आज भी ये ओवरकम नहीं कर पाया है, एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक. आज के डेट पे भी 1 रशियन रूबल इज इक्वल्स टू 0.78 पैसा INR. सो ये जो वॉर है, इस पे ना रशियन सिटीजन का हाथ है ना यूक्रेनियन सिटीजन का हाथ है. इवन रशियन सिटीजन, दे आर प्रोटेस्टिंग, ह्यूजली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस वॉर, बट दे आर द वन हु विल बी सफरिंग द मोस्ट. सो दैट इज वाई व्हेन रशिया का बैंकक्रप्ट होने वाला है, व्हेन यूक्रेन का मनी विड्रॉल बंद है, यूक्रेन का बैंक्स बंद है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ट्रांजैक्टिंग, दे आर यूजिंग बिटकॉइन एज अ रियल करेंसी. जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि Bitcoin is just a digital thing. It's not asset. It's not currency. But in this point of time, जब world में सब कुछ बंद है, सारे के सारे ट्रेडिशनल सिस्टम बंद है, Bitcoin is the only currency. ऐसे टाइम पे ही Bitcoin का एक्चुअल वैल्यू पता चलता है. ये वाला बात आज एल साल्वाडोर का प्रेसिडेंट नायब बुकेले भी ट्वीट पे बोला है. This is the time when government should learn about Bitcoin, that how valuable is this. चाहे $100,000 पर बिटकॉइन या फिर $1 million पर बिटकॉइन क्यों ना हो जाए, बिटकॉइन विल बी स्टिल बी अंडर वैल्यूएबल. दिस इज द ट्रूथ. आने वाले टाइम पे जब ऐसे क्राइसिस आएगा, बिटकॉइन तब उठेगा. यूक्रेनियन गवर्नमेंट, दे आर आस्किंग फॉर डोनेशन इनटू बिटकॉइन, इथेरियम एंड थीटर, एंड एट द सेम टाइम सम गवर्नमेंट्स आर टेलिंग दिस इज नॉट अ करेंसी, दिस इज नॉट एन एसेट. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट टू बैन बिटकॉइन. दे जस्ट कैन लूट
loot their citizen, like Indian government is looting with 30% tax, 8% GST and 1% TDS, and ये वाला start होने वाला है from April 1st. They are looting their citizen and they think that Bitcoin is a gambling, but Bitcoin is a way to freedom. So now let's get back to the chart. ऐसे कुछ भी बोलने का नहीं है क्योंकि जो भी है it's completely clear. According to this one day candlestick chart, it was a gigantic move with a huge volume last day. So anyone who is putting money today, it's going to be 2x in few days, in coming days. But there will be a short term volatilities. Like last time भी ऐसे ही big move आया था, उसके बाद Bitcoin का nature, Bitcoin का up and down, volatile, very short term. But the most important thing which I want to show all of you, this huge W pattern. क्योंकि Bitcoin का जो right shoulder है, which is higher than the left shoulder here. So that is why this is a legit W pattern. So it sounds great कि there is a W pattern which can be unfolding, which can be a successful breakout towards the upside. But now the tension वाला reason. So ये W pattern का जो neckline है, which is somewhere around 45,000. अगर ये W pattern को successfully breakout करना है, then we need a huge volume daily candle closing above at least 45,500. अगर ऐसा कुछ close हुआ in coming days to weeks, then there is nothing in this world which can stop Bitcoin from reaching $55,000. So now the real challenge, now the real test for Bitcoin, क्योंकि ये same W pattern का neckline, and look at this resistance, support, look at all this touch point in last 1.5 years. But this is nothing, क्योंकि same last 1.5 year पे ये वाला line पे भी जहाँ पे 37,000 to 41,000 ये वाला line पे भी बहुत सारे touch points था, but indeed Bitcoin ने overcome किया है. So let's be optimistic कि already Bitcoin ने एक बार try किया था, Bitcoin has failed. Now this is the second time when Bitcoin is approaching towards this $45,000 resistance line. अगर there is a daily candle closing above 45,000, I am putting my everything in Bitcoin. So that's it from my side, guys. Anyways, I hope you have enjoyed this video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe this channel, like this video. Don't forget to be a part of our Twitter and Telegram handle where you will get all this news on time. So make sure you are hitting that subscribe button. Go down below. You will get all those links for Telegram and Twitter. So बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ. Till then, take care. Dave signing off.